Namaskar everyone. Today on behalf of Cambridge School Dabra, I, Diksha Punjabi, here to talk about World Heritage Day, which is celebrated on 18th April every year. At a time like this, when everyone is dealing with different kinds of losses and grieving because a pandemic has put a pause to our fast-paced lives, it is our shared culture, heritage and shared responsibility that brings us closer together as people. World Heritage Day has been celebrated keeping in mind the decided theme that the International Council on Monuments and Sites chooses every year. Due to its influence by the Council on this celebration, it is also referred to as International Day for Monuments and Sites. India truly has a rich history and thus it gives us more the reason to conserve and preserve that. This day is also a reminder to preserve our cultural heritage and create awareness about the same in the young minds who are the next generation. So let's us know about tangible and intangible cultural heritage of India listed in UNESCO. So first let's begin with the tangible heritage. Do you know that India consists of 36 World Heritage Sites approved by UNESCO? Yes, India has it. If you are visiting India for the first time and look for an ideal vacation, the best way is to keep as many World Heritage Sites as possible in your travel itinerary. We will know about the top 10 UNESCO World Heritage Sites to enjoy in India. In number 10 in our list, we have Agra Fort. It was listed in UNESCO World Heritage Site list in the year 1983. Agra Fort is widely considered to be a masterpiece of planning, design and construction. Some of its internal structure includes the stunning Moti Masjid, Diwani Khas, which was for the private audience, and Diwani Am, which was for the public audience. This fort was built by Mughal Emperor Akbar in 1565 AD, which is a majestic sandstone built during the Mughal Empire. It is said that the construction of the fort was originally began by Emperor Akbar, but completed by his grandson Shah Jahan, who added the most of the marble monuments here. In number 9 in our list, we have Kaziranga National Park. This park is one of the greatest wildlife emblems of the country. The UNESCO World Heritage Site of Kaziranga National Park is famed as home to 2/3 of the world's population of the rare one-horned rhinoceros. The park is surrounded by wetlands, forest and grasslands, which shelters large population of tigers, venomous snakes like king cobra, rock python, deer and wild buffaloes. If you are lucky, you can also spot a herd of elephants making their way grandly through the park. The park is surrounded by ancient temples, beautiful waterfall and large tea estates. In number 8 in our list, we have Sun Temple at Konark. This temple is dedicated to Surya or the sun god and designed like his chariot. The massive and magnificent Sun Temple at Konark is one of the finest examples of ancient Indian architectural heritage. It was added in UNESCO World Heritage Site list in the year 1984. It was built in 13th century by Ganga king Narasimhadeva I. The temple with stunning sculptural details marks the most evolved period in the Kalinga architecture. It is said that the temple was designed in such a way that the rising sun's first ray would illuminate the temple and the goddess.
In number 7 in our list, we have Valley of Flowers National Park. It was Frank Smythe, an English mountaineer, who discovered this beautiful place in 1931 when he was returning after completing an expedition to Mount Kamet. In August and September, the valley comes alive when thousands of flowers are in full bloom. A popular trek to this paradisical place takes travelers through gorgeous landscapes when they get the chance to sight rare and exotic Himalayan flora. In number 6 in our list, we have Khajuraho Group of Monuments. The Khajuraho Group of Monuments is a group of Hindu temples and Jain temples in Madhya Pradesh, about 175 southeast of Jhansi. This group of monuments were declared UNESCO World Heritage Site in the year 1986. The temples are famous for their Nagara style of architecture and erotic sculptures. The temples at Khajuraho were built during Chandela dynasty, but today only 20 temples remained. They fall into 3 distinct groups and belong to 2 different religions, Hinduism and Jainism. The temple of Kadaria is decorated with many sculptures that are among the greatest masterpieces of Indian art. In number 5 in our list, we have Sundarban, which is home to the unique Royal Bengal tiger. The Sundarbans is a UNESCO World Heritage Site which was listed in the year 1987 and is one of the largest mangrove forests in the world. The Sundarban got its name from a mangrove plant called Sundari, which means a beautiful forest. A cluster of low-lying islands in the Bay of Bengal spread across India and Bangladesh make up the Sundarbans. This forest covers an area of 10,000 square kilometers and lie on the delta of Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers in the Bay of Bengal. The area is covered with a variety of flora and fauna, including 260 species of birds and other threatened species like crocodile, Indian python, and the famous Royal Bengal tiger. In number 4 in our list, we have Qutub Minar and its monuments. As old as the history of the Delhi Sultanate, the Ionic Qutub Minar, the world's tallest brick minaret, dominates the skyline of the city. Standing 73 feet tall, this 5-story tower, a UNESCO World Heritage Site, remains one of the most magnificent buildings of India from the medieval era. The Qutub Minar was commissioned by Qutbuddin Aibak, who laid the foundation of Mamluk dynasty in India. But Qutbuddin Aibak did not live long enough to witness the completion. The tower was finally completed by his successors Iltutmish and Firoz Shah Tughlaq.
In number 3 in our list, we have Mountain Railways of India. The Mountain Railways of India are the railway lines that were built in the mountains of India, which includes mainly the three railways: the Darjeeling Himalayan Railway in West Bengal, the Nilgiri Mountain Railway in Tamil Nadu, and the Kalka Shimla Railway in Himachal. The Darjeeling Himalayan Railways were the first and is still a most outstanding example of the mountain railways in India. These mountain railways declared by UNESCO as a World Heritage Site in the year 1999, 2005 and 2008 respectively. In number 2 in our list, we have Jaipur city. Jaipur, known for its iconic architectural legacy and vibrant culture, on July 6, 2019 made its entry into the UNESCO World Heritage Site. Jaipur is the capital of Rajasthan, which is popularly known as the Pink City. This city is full of history and culture. Here the past comes alive in magnificent forts and palaces where once lived the Maharajas. And at last, in number 1 in our list, we have the Taj Mahal. Designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983 for being the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage. This monument was built as a memorial by Mughal Emperor Shah Jahan for his wife Mumtaz Mahal after her death. It is one of the 7 wonders of the world and is a monument of pride, not just Agra, but for India. Every year, thousands of tourists around the world visit this breathtakingly marble monument. It is considered by many as the most beautiful building constructed by a man. A UNESCO World Heritage Site, it is featured in almost all literature and is one of the most enduring images of the country. Its name is believed to have been drawn from the Persian language. Taj means crown and Mahal means palaces, thus making this Palace of the Crown. Now, some intangible heritage of India. भारत देश संसार की प्राचीन और महानतम संस्कृतियों में से एक है जिसने विश्व को ज्ञान, आध्यात्म और शांति का मार्ग दिखाया। योग जैसी महान संस्कृति का विकास भी इसी देश में हुआ जिसका लाभ आज पूरी दुनिया ले रही है। ये योग का प्रभाव ही है कि यूनेस्को ने इसे विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा है। पर आखिर ये विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची है क्या? आपने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि यूनेस्को ने विश्व भर की महत्वपूर्ण संस्कृतियों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए 2008 में विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची की शुरुआत करी। तो आइए नज़र डालते हैं इस सूची में शामिल भारत की अन्य सांस्कृतिक विरासतों पर। पहले बात करते हैं कुडियट्टम या कुटियत्तम, केरला का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो प्राचीन सांस्कृतिक नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण है, जिसमें आँख और हाथ के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। पारंपरिक तौर पर इस कला का प्रदर्शन मंदिरों में चाक्यर समुदाय द्वारा ही किया जाता था। 1955 में गुरु मानी माधव चक्यार ने पहली बार कुडियट्टम का प्रदर्शन मंदिर से बाहर किया, जिसमें उनकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। 1980 में वे पहले इंसान भी बने जिसने इस कला को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। यूनेस्को ने इस कला की सुरक्षा और इसको बढ़ावा देने के लिए 2008 में अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी जगह दी। सूची में अगला नाम आता है रामलीला का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये भारत का एक लोक नाटक है जो रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कहानी और उनके और रावण के बीच होने वाले युद्ध की कहानी का मंचन होता है। इसका प्रदर्शन उत्तर भारत में दशहरा के दौरान लगभग 10 दिन तक किया जाता है। अयोध्या, रामनगर, वाराणसी, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना और मधुबनी की रामलीला खास तौर से लोकप्रिय हैं। रामलीला जाति भेद से उठकर सभी लोगों को एक साथ लाने का काम करती है।
टीवी मीडिया के विकास के कारण रामलीला के दर्शकों में काफ़ी कमी देखी गई है, इसलिए यूनेस्को ने 2008 में इसे अपनी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। अब बात करते हैं वेदों के बारे में। वेदों की रचना आर्य जाति के लोगों ने लगभग 3500 वर्ष पहले की और इन्हें हिंदुओं के प्राथमिक ज्ञान के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। शुरुआत में वेदों का ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी सिर्फ बोलकर ही दिया जाता था, क्योंकि वेद पाठ में सुर और लय का बहुत अधिक महत्व होता है। हालांकि कुछ सदी पहले इस ज्ञान को लिखित रूप में भी संकलित किया गया, जिसकी भाषा सांस्कृतिक रखी गई, जिससे इसकी मौखिक गरिमा को भी आघात लगा है। ऐसा माना जाता है वेदों का अधिकतर ज्ञान समय के साथ लुप्त हो चुका है। यूनेस्को ने वेद और वेद पाठ के ज्ञान को बचाने के लिए 2008 में अपने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया। लिस्ट में अगला नाम है रामन का, जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का एक धार्मिक त्यौहार है जो हिमालय क्षेत्र में सिर्फ सालूर और डुंगरा गांव में ही मनाया जाता है। ये त्यौहार स्थानीय देवता भूमियाल के मंदिर में उनके सम्मान में हर साल बैसाखी के समय मनाया जाता है। त्यौहार की शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से शुरू होती है, जिसके बाद कई तरह के नृत्य, प्रार्थना, राम कथा और जागर, जिसमें स्थानीय कथाओं को गाया जाता है, का प्रदर्शन होता है। पैसे की कमी और एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होने के कारण इस कला के लुप्त होने का खतरा है, इसलिए यूनेस्को ने इसे 2009 में अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। सूची में अगला नाम आता है मुडियट का। मुडियट केरला का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जो कि देवी काली और दानव दारिका के बीच लड़ाई की कथा को दर्शाता है। ये नृत्य फरवरी और मई के फसल के मौसम में भद्रकाली के मंदिर में किया जाता है। ये नृत्य नाटक मरार और कुरुप्पू समुदाय के लोगों द्वारा ही ज़्यादातर प्रस्तुत किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म एक खास समुदाय तक सीमित है, जिसमें बड़े लोग अगली पीढ़ी को ये कला सिखाते हैं। मॉडर्नाइजेशन के कारण इस कला के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मुडियट को 2010 में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अगली सांस्कृतिक विरासत है कालबेलिया, जो राजस्थान की एक नृत्य कला है जो इसी नाम के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया का प्रमुख व्यवसाय सांप पकड़ना और सपेरे का है और इसकी झलक उनके नृत्य और उनके पहनावे में साफ देखी जा सकती है। समुदाय की महिलाएं काले कपड़ों में नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका संगीत जन कथाओं और दंत कथाओं पर आधारित होता है और ये अपना संगीत वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जो इस कला को खास बनाता है, जिसका विकास पूर्वी भारत में हुआ है। ये डांस 3 प्रकार का होता है: बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला और उड़ीसा का मयूरभंज। ये नृत्य त्योहारों के समय किया जाता है, जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी शक्ति की उपासना करी जाती है। साथ ही इसमें रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं का भी नृत्य प्रदर्शन होता है। इस नृत्य में युद्ध के मूवमेंट्स का भी प्रयोग होता है, जो इसे विशेष बनाता है। यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट में 2010 में शामिल किया है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट चैंट्स की। लद्दाख के बुद्ध मठों में लामा पवित्र ग्रंथों का संगीतमय ढंग से पाठ किया करते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, दर्शन और भावनाएं मिली होती हैं। ये पाठ लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक भलाई, मन की पवित्रता, शांति और बुद्धा के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। ये पाठ मठों में हर दिन किया जाता है, जिसमें संसार की शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसे यूनेस्को ने 2012 में अपनी लिस्ट में शामिल किया। अगला है मणिपुरी संकीर्तन, जो मणिपुर राज्य का एक आर्ट फॉर्म है जिसे नाच, गाने और ढोल के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः मणिपुर में वैष्णव समुदाय के लोग त्योहारों के वक्त करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः एक दल में 2 ढोल वादक और 10 नाचने गाने वाले होते हैं। इसे यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 2013 में जगह मिली। जदियाला गुरु के थतेरा समुदाय की कला को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। थतेरा समुदाय राजपूत या क्षत्रिय जाति के सदस्य होते हैं। थतेरा समुदाय के लोग धातु जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने में निपुण होते हैं, जिनका घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ सामाजिक उत्सवों जैसे शादियां और मंदिरों में भी किया जाता है। हालांकि थतेरा समुदाय के लोग
पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन यूनेस्को ने पंजाब के जदियाला गुरु के थतेरों को ही 2014 में अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। सालों से सरकारों ने इस कला की उपेक्षा की है, परंतु यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने के बाद ही इस क्षेत्र में थोड़ा काम हो रहा है। अंत में बात करते हैं कुंभ मेले के बारे में, जो इस सूची में सबसे नया है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में आता है। ये त्यौहार 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है, जिसमें लोग स्थानीय नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के वक्त स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसे 2017 में यूनेस्को ने अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसके सांस्कृतिक विविधता के लिए शामिल किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसम्मेलन है जिसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है।